Hi everyone, welcome to today's session. Let's get started with our today's session that we are supposed to do here. Just a sec. Okay, let's get started with this one. So आज का जो हमें चैप्टर करना है that is going to be about the parliamentary system. ठीक है? Let's get started. Okay, मैं ये पिछले 2 मिनट से कह रही हूँ. I need to start it. So welcome to Studyship with Krati. This is Krati Sahu, educational content creator on YouTube since last 3 years, pursuing my honors from University of Delhi. And let's get started with today's session. तो मेरे चैनल पे आई डिसाइडेड कि सामान मेरा कवर पॉलिटी, तो वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ. लेट्स कवर दिस वन. Okay, just a second. I'm so sorry, there was a disturbance on restart. Okay, so I decided कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी करने वाले हैं तो वही करेंगे. You can just connect with me onto my social media in case of any query and let's see. So chapter 11 है parliamentary system. अभी तक हम total चैप्टर 10 कर चुके हैं. ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके एंड एवरीथिंग. दिस इज गोइंग टू बी अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम. हम हर एक डायमेंशन को देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे आया, from where we actually opted this thing. And beside this, we will see or we will talk about the criticism of that parliamentary system. Advantage क्या है, disadvantage क्या है, everything we are supposed to discuss. So let's see. Constitution somewhere provides for parliamentary form of government at a center and state. जो आर्टिकल 74 एंड 75 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये डील करते हैं विद सेंट्रल पार्लियामेंट्री सिस्टम. हियर आर्टिकल जो 163 था, 164 था, दिस डील्स विद स्टेट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि लाइक द वे वी आर हैविंग अ सेंटर, स्टेट में भी वैसे ही है. तो 74 एंड 75 याद रखिएगा एंड 163 टू 164 दीज आर मेंशन्ड लाइक सेंटर एंड स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम. एंड ऑपोजिशन टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म, एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर है, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है उसमें जो हमारे एग्जीक्यूटिव होती है दैट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो देयर एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बट हमारे यहाँ पे है. ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है ब्रिटेन से, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जिसको वहाँ पे बोला जाता है. सो दिस इज समथिंग दैट वी बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन. It's time to discuss about the features of a parliamentary government. Nominal and real executive की बात कर लेते हैं. President is only nominal executive with the PM and Council of Ministers as real executive. Advice of COM is binding on President. जो COM की एडवाइस होती है यानी कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड होती है. लाइक प्रेसिडेंट इज सपोज टू टेक एडवाइसेस फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है. मेजॉरिटी पार्टी रूल, देखिए फीचर्स हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो वन बाय वन वी नीड टू डिस्कस दिस वन. ये काफ़ी अच्छा था. ठीक है. मेजॉरिटी पार्टी रूल, politics party with a majority in Lok Sabha form government and president appoint its leader as PM, जो कि होता है. Other ministers are appointed by president on binding advice of PM, की मतलब PM किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना चाहता है. ठीक है वो. However, president has discretion to choose anyone as PM. Collective responsibility, और ये discretion कब होता है, जब they are unable to decide कि कौन बने, तो then president use this power.
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट्री in general and Lok Sabha in particular. For instance, Article 75. Lok Sabha can dismiss entire ministry by passing vote of no confidence. या पॉलिटिकल होमोजेनिटी की बात कर लेते हैं. COM यानी कि जो हमारा कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, they share same political ideology that belongs to same political party and are beyond by the consensus and coalition here. डबल मेंबरशिप क्या होती है? डबल मेंबरशिप जिसमें ना जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दे होल्ड मेंबरशिप इन लेजिस्लेटिव एज वेल एज इन एग्जीक्यूटिव. सो एनी मिनिस्टर हु इज नॉट एन एमपी फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 6 मंथ, दिस सीजेस टू अ मिनिस्टर. मतलब उनको कहीं ना कहीं री इलेक्शन करवाने होंगे, खुद को इलेक्ट करवाना होगा, देन ओनली दे विल बी एबल टू बी अ मिनिस्टर एंड विल बी एबल टू होल्ड एज अ एमपी. लीडरशिप ऑफ द पीएम इज द लीडर ऑफ COM, पार्लियामेंट्री एंड मेजॉरिटी पार्टी हियर. डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लेट्स सी. एग्जीक्यूटिव इंजॉय करती है राइट टू डिसॉल्व लेजिस्लेचर क्योंकि वो कर सकती है. प्रेसिडेंट डिसॉल्व लेजिस्लेचर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम बिफोर इलेक्शन. सो यू सी, एग्जीक्यूटिव एंजॉय राइट टू डिसॉल्व लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर को डिसॉल्व एग्जीक्यूटिव कर सकती है और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेचर को, लेकिन उसके लिए उसको पीएम से बिफोर इलेक्शन एडवाइस लेनी होगी इस बारे में. Secrecy. Ministers cannot divulge info on COM proceedings, policies, decisions. President administer the oath of secrecy here, and that we need to remember. Let's say it's secrecy. Okay, secrecy. So ministers cannot divulge from this or cannot divulge info on CM proceedings. They are not allowed to do so. Features of presidential government. हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस कर रहे हैं, बट हम इसमें प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके फीचर्स भी डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज दैट कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है एज वेल एज गवर्नमेंट होता है, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव होता है क्योंकि वो नो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज यूज्ड टू बी देयर इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पे फिर पीएम का रोल है. प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय लेजिस्लेचर एक्सेप्ट थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स. President's cabinet is only an advisory body here. The advice is not binding. President and his secretaries, members of cabinet, are not responsible to the legislature and are not members of the legislature also. In fact, I'm going to say here it is a. Wait a minute. I think it is short. I'm forgetting something. अच्छा ठीक है. प्रेसिडेंट और उसके जो सेक्रेटरीज होते हैं, मतलब मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड आर नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर. इनफैक्ट जो सेक्रेटरीज होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड ऑन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बाय द प्रेसिडेंट हियर. प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस, बल्कि उस वाले में वो कर सकता था. All three wings of government यानी कि आप 3 मेन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली करते हैं. लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता. दे आर समवेयर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड ईच वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल टू द अनदर वन एंड नीड टू मेक श्योर दैट दे डू नॉट सबवर्ट द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर लेते हैं. हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बनाना वो होता है. लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट होगा इसमें एज एग्जीक्यूटिव आर अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. मैरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम का दूसरा ये भी है कि इस पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है, क्योंकि जो एमपीज होते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, दे आर डायरेक्टली एबल टू चेक द गवर्नमेंट. अगर सरकार कुछ उल्टा सीधा करती है, if something is not desirable to do, they can actually be stopped. Prevents despotism. मतलब एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी डिस्मिस्ड बाय देम. रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है. जब भी कोई रूलिंग पार्टी लूज करती है मेजॉरिटी अपनी, ऑपोजिशन जो है वो इनवाइट की जा सकती है कि आइए भाई आप सरकार बनाइए, अदरवाइज फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे. ठीक है. वाइट प्रेसिडेंट, आई मीन से वाइट रिप्रेजेंटेशन, आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जो है वो टंग स्लिप हो रहा है. वाइड रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. मिनिस्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, देयरफॉर अलाउइंग वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपिनियन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हियर. सो दिस मेक श्योर कि हम जो वाला रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया, क्योंकि हर एक पोर्शन से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है. तो डाइवर्स
हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, डाइवर्स पीपल हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू डू वेल बीइंग ऑफ आवर पीपल। अब चूंकि हर एक चीज़ के अगर कुछ मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिमेरिट्स देख लेते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट, पहली बात तो ये गवर्नमेंट हैव नो गारंटी ऑफ टेन्योर एंड आर एट द मर्सी ऑफ पार्टी लेजिस्लेचर इन मेजॉरिटी। A confidence motion or political defection or evils of multi-party system could not bring the government down here. That's somewhere demerit. नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, मतलब अगर एक पार्टी आई, एक गवर्नमेंट आई, वो 5 साल के लिए आई तो वो अपनी पॉलिसी लाएगी। अगले साल अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो वो सारी जो पहले थी वो सब वापस ले ली जाएंगी। इसलिए दिस एक्चुअली स्टे फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज एक्चुअली नॉट गुड, क्योंकि कंटिन्यूशन ही नहीं होगा पॉलिसी का तो कहीं ना कहीं वो हिंडर होगा हमारे लिए डेवलपमेंट में। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट की बात कर लेते हैं। When ruling party has absolute majority, its leader in cabinet become dictatorial and autocratic also. Against separation of powers की बात करें, cabinet acts as a leader of legislature and executive, allowing no check and balances onto their powers, and this is something जो बेकार चीज हो जाती है। Government by amateur, तो पीएम लिमिटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम आइदर हाउस, या तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से कर सकता है। कोई नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट कैन बी अपॉइंटेड हियर। रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखिए सबसे पहली बात हमारे यहाँ पे ये था कि फेमिलियरिटी थी लोगों को कि भैया ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। ब्रिटिश के टाइम पे भी यही था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो प्रेफरेंस देती थी कि इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। need to avoid legislature and executive disputes here, and diversity of India required wide representation in government। तो वो पार्लियामेंट्री वाला, पार्लियामेंट के अलावा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं हो रहा था। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, हमने कुछ चेंजेस किए एज पर आर रिक्वायरमेंट। वो क्या है, इंडिया हैड रिपब्लिकन सिस्टम इंस्टेड ऑफ मोनार्की, जो कि ब्रिटेन में है। पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन एज वी हैव, इंडिया हैज रिटन constitution here. In India, PM can be member of either house of parliament, बल्कि British PM can only member of from lower house here. Indian ministers can be appointed for a max period of 6 months, even if they are not PMs here, or like sorry, even if they are not MPs here. बल्कि जो British ministers होते हैं, they are always MPs, मतलब हमेशा ही होते हैं। Indian Prime Minister और Indian ministers do not countersign the orders of the head of the state, means the president. British ministers countersign orders of the monarch here. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। British Parliament has shadow cabinet formed of members of opposition. इंडिया में ऐसा shadow cabinet type of concept कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ opposition का कोई ऐसा मतलब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि मेंबर ऑफ ऑपोजिशन उसमें रहेंगे। तो शैडो कैबिनेट वाला सिस्टम हमने नहीं लिया। So you see that yes, we copied certain things, or we taken this parliamentary system from inspired by government, but doesn't mean that कि जैसा था हमने मेड लिया उसको slavish copy है ये। No, it's not. It's not slavish imitation here. It's just that we opted everything as per our condition. Okay, so this is something that is going to be important for you people and need to note down. We have done by the way with the chapter जिसमें हमने parliamentary system किया था, तो काफ़ी अच्छा एंड छोटा चैप्टर था, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो हमने सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन देखा, देन वी टॉक्ड अबाउट कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, वी डिस्कस्ड देयर फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, वी डिस्कस्ड देयर मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। इन केस यू आर गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, इस वीडियो के एक्चुअली ना कॉमेंट्स ऑफ है, बट ऑन कर दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि कई बार आजकल पता नहीं कि सेटिंग्स का थोड़ा सा इशू हो रहा है। आई टर्न इट ऑन बट टर्न ऑफ हो जाता है, सो आई बी चेंजिंग इट। ओके, होप यू डोंट हैव एनी डाउट, जस्ट do you have any sort of a doubt? You can ask me if you have. And yeah, wanted to tell you one important thing. Actually, Studyship with Krati's website is working not well now, मतलब हम उस पर वर्क कर रहे हैं,
तो इट विल बी टेकिंग सम टाइम. हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स किए हैं, आई विल बी प्रोवाइडिंग द नोट्स फॉर दोज. तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, लाइक अप टू for like 3 or not a 3, about a week you need to wait. और जैसे ही वो वेबसाइट वर्क करने लगेगी, we will be sharing the notes there, so you can just find the notes very easily. इस बार हम इंटरफेस भी चेंज करने वाले हैं वेबसाइट का. Okay, thank you so much. Thank you hardcore. I'm also a fan of few people that you attend here and come daily. Okay, bye bye to everyone. Let's see you into our next class. Most probably I won't be able to take class on Sunday, but still I'll try my best to have one class on Sunday, like for later. Om Prakash, I still I'm unable to understand your question. What is geographical area of Pakistan? वही तो है Pakistan boundary. Please, can you please be clear with your question, like what you wanted to ask here? Take your time and then say. Are you gonna ask me? Hi Virendra, welcome to today's class. We are about to end. Okay, then allow me to end our class. I think that you people aren't having any kind of a doubt. अगर है तो आप मुझे comment section में बता सकते हो. I'll be turning on the comment after ending.